So now today we will talk about YTM. Okay, and most probably this would be our last topic for your midterm. Okay, so YTM, which is called as yield to maturity. Okay, YTM is yield to maturity, and it is what we call as rate of return. ठीक है, इसको हम लोग rate of return में. अब yield to maturity क्या चीज है? Yield to maturity is basically what we are getting as the return up till the maturity of a financial instrument. ठीक है? In other words, जो आप लोग कहते थे ना कि सर वो I या वो KD अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास I नहीं होगा या KD नहीं होगा and none of the markers are working. Okay, so जो आप लोग कहते थे ना कि I, KD या KP, ठीक, ये आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? देख, आपने करना क्या है? Now this is how you will calculate the rate of return on yield. Determine the expected cash flows. ठीक है? पहले cash flows decide करें cash flows कितने कितने हैं कौन कौन से. पहले आप सारे cash flows लिखें. Replace the intrinsic value with the market price. Now intrinsic value जो कि आपने find out करनी है, जो उसकी कीमत होनी चाहिए, उसकी बजाय आप लोग लिखते हैं market price. कि market price क्या है? Solve for the market required rate of return that equals the discounted cash flows to the market price. Then you do the calculation to find out the missing figure. जो missing figure होती है उसको find out कर लें. This is your missing figure. आप इसको find out करें. ठीक है? So this will be market required rate of return, and it will equate the discounted cash flows to the market price. इस rate पर आप क्या market price discounted cash flows के बराबर. ठीक है? Start करें. Let's start. Okay. Determine the yield to maturity for the coupon paying bond with a finite. Now, if it's a finite life, जिसकी लाइफ कुछ ना कुछ होती है, और हम लोगों ने कहा था कि उसमें आपके पास annuity plus maturity value, जो भी वो annuity, जो उसकी payments आ रही है, coupon की payments, it acts like an annuity, and then we have the maturity value. Okay? इसमें आप लोग क्या करेंगे? इसमें आप लोग इसको लिख देंगे in table form. ठीक है? लिख दिया आपने. This is actually not given to us. ये चीज मेरे पास नहीं है. So this is my yield to maturity. Okay? This is my yield to maturity, and the calculation, it would be a bit lengthy calculation. थोड़ी सी शायद calculation lengthy हो जाए, लेकिन मुश्किल नहीं. हाँ, उसके lengthy होने की वजह से शायद आप गलती कर लें. जिस तरह phases वाले problem है. It wasn't difficult, but it was a bit lengthy. So you might make a mistake. जिस तरह होता है ना, years में आप mistake कर लें, n को गलत लिख दें, तो वो अगर गलती आपने ना की तो otherwise it is easy. Okay. So now how you would do it? Julie Miller wants to determine the YTM for an issue of outstanding bonds at Basket Wonders. Basket Wonders has an issue of 10% annual coupon bonds. So coupon is 10%. So if coupon is 10%, what would be the coupon payment? 10% of the 1,000. Of 1,000, it would be 100. So now we know that this figure is 100. सही है? ये 100 होगी. PVI ये find out करना है KD और NP. But we do not know KD, and N in this case would be for with 15 years left. BW has an issue of 10% annual coupon bonds with 15 years left to maturity. So N is 15, N भी आप 15 है. ठीक, ये भी हो गया. Okay. The bonds have a current market value of 1,250. Now the current market value is given. Now over here there is no mention of current market value. लेकिन हमने ये कहा था कि let's say that this value equated with current market value. इसको current market value थोड़ी देर के बना. हालांकि दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है? दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों में फर्क होता है. So इसको मैं यहाँ पे current market value equals और ये सारी चीजें. But since this is not given, how you would do it? Any idea? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये किया ना, ये 100 आया. Current market value in this case is 1250 cost. 1250 equals 100 into PVIFA KD. Was that given in the question? Yes. Is KD given in the question? No, sir. Is KD given in the question? N is 15 years. Okay. So N is 15 years. Sorry, 15 years plus maturity value
1000. Once again, PVIF. KD not given. Not given. N 15. कैसे करोगे? Any idea? जल्दी से मुझे कोई idea दें, अगर नहीं है तो मैं आपको 1250 को डिवाइड कर देंगे 100 हो PVI पे दोनों को डिवाइड कर देंगे Divide 1250 on both sides. divide 1250 on both sides. So what will I get? 100 divided फॉर्मूले से करेंगे वहाँ पे KD फाइंड फॉर्मूले से करेंगे वहाँ पे KD फाइंड करेंगे. फॉर्मूला किसको याद है? 1 minus 1 minus 1 plus One. n 1 plus I power n 1 minus 1 1 over 1 plus I raised to power of n whole divided by I. whole divided by I. तो यहाँ पे दो बार I आ रहा है, एक ऊपर और एक नीचे. ठीक? I tried to do that in the last class with a student and वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वो खुद भी कहता है कि सर बस नहीं होता. ठीक है? So it's a bit difficult. This one is a bit easier. लेकिन इसको किस तरह करेंगे? कोई idea? नहीं? कोई idea नहीं? कोई idea नहीं? इसको कैसे करेंगे? Okay. Let's find out. इसको कैसे करेंगे? Now what is the YTM? Now we need to find out YTM, which we said is actually your discount. This yield to maturity is actually your discount. Okay. अब देखिए 1250 हमने ये सारी वैल्यूज लिख दी. लिख दी? ठीक है? लिख दी आपने. अब hit and try. Hit and try. क्या लिखिए? एक वैल्यू पुट करें and let's find out क्या आंसर आएगा. फिर दूसरी वैल्यू पुट करें फिर find out क्या आंसर आएगा. नहीं किया कभी? Yes, sir. Let's try. Let's try. Okay, let's try. Let's go to the table. Let's go to the table and let's learn this. This is something which normally people use. यार बड़ी जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. Maths में sir. हाँ, मैथ्स में कहीं पे क्वेश्चन ना आ रहा हो, उसका आंसर ना आ रहा हो, Yes, sir, right. फॉक्सेट को इस्तेमाल करो. Always use this. Okay, so let's go to the table. ये लीजिए. 712 कौन सा नंबर है? 712 बस अब आ गई. नहीं है, आ गई. ऊपर है सर ऊपर. आ गई. नीचे ओके, जितना ज्यादा जूम किसने किया? ठीक है, दिस इज गुड नाउ. एंड रोटेट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ओके जी, PVIF A, पहले PVIF A. The first one would be a wild guess. पहला वाला जो होगा वो एक wild guess आप करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद काम नहीं चलेगा. Okay, just make a wild guess. Just make a wild. You will have to make a wild guess. ठीक है? आपको वैसे बता दूं कि अंदाजे से जो नॉर्मली रेट्स होते हैं आप तक जॉब के लिए देखें, वो YTM के रेट्स क्या होते थे? क्वेश्चंस 14 9 10 के आसपास नहीं होते थे. मैं जितने भी क्वेश्चन देखता हूँ 9 10 8 9 10 इसके आसपास केडी की वैल्यू क्वेश्चंस में 10%. आप तक जो क्वेश्चन ज्यादातर यही होता है ना 10% 8% 9%. ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी कहते हैं मुझे, मैं उससे आपको कर सकता था. सर ये फ्यूचर 15. वैल्यू की टेबल है फ्यूचर जी? टेबल अच्छा सॉरी, दिस इज PVIFA which is the next one. Okay, this is the one and we have 15 years, huh? So we will have to look at here 15 years. सही है, यहाँ पे देखना पड़ेगा. ओके जी, मेक अ वाइल्ड गेस. 15 आपने कहा किसी ने? किसी ने 15 कहा. So let's take KD equals 15. So when KD equals 15, जब KD 15 होगा तो क्या होगा? Let's find out. This was 100. When KD equals 15, okay, go to the next one. लेकिन दूसरा टेबल आपने कितनी बार इस्तेमाल किया है यार? दूसरा पेज किसी वीडियो में अब तक कितनी बार आपने यूज किया? 2-3 बार. नहीं किया ना, ज्यादातर पहला पेज यूज करते हैं. So 15 would not be a good idea. 10 करते हैं. Let's find it out. Okay, 10. So when we look at 10% in 15 years, this is equal to 7.606. Okay, 7.606. ये हो गया plus 1000. For this we will have to go to PVIF टेबल पे जाना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड टेबल और KD आपकी वही 10% है. ठीक है, वही 10% for PVIF. So let's go to PVIF and 10%. So PVIF 10% in 15 years. G 15
and 10%. 0.239. Okay, 0.239. So this would be equal to 239, Yes. and this one would be 760.6. 760.6 Yes. plus 239. 999.6. 999.6. और हमें कितनी फिगर चाहिए? 1250. We have to equate it to that figure now. जिस जगह पे ये बराबर आएगा इसका मतलब वो आपका KD है. इसी तरह है ना? Okay. So when KD equals 10, I get 999.6. तो अब क्या करूं? किस तरफ मूव करूं? KD को ज्यादा करूं या KD को कम करूं? अब ये बताइए. KD को ज्यादा करते हैं सर. KD को ज्यादा करते हैं तो नहीं वो तो फिर है ना कम हो सकता है. ये इसको आप ज्यादा कर नहीं सकते हो सर. क्या कर रहे हैं? ईयर्स को कैसे ज्यादा कर रहे हैं? क्वेश्चन बता रहा है कि इतने ईयर्स हैं. आप क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे आप? क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल हैं. इसको तो नहीं चेंज कर सकता. मैं KD को चेंज करके देख सकता हूं कि KD क्या है. वो पूछ रहा है YTM क्या है, मैं उसको कहूंगा ये YTM. ठीक है? तो एक एक करके इस तरह करके देखता हूं. तो अब मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में व्हाट शुड आई डू? KD कम करूंगा. KD कम करूंगा. KD इज इन डिनोमिनेटर ना. KD कम करूंगा तो वहां पे वैल्यू बढ़ जाएगी. जब बढ़ जाएगी so 999 से it would move towards 1250. उसके नजदीक होती जाएगी ना. 10 था. So 10 से एक ज्यादा करके देखूं या 2? 8. तो अब 2 कम कर. चले 8 when KD equals 8. Okay, so let's find out when KD equals 8. So let's go back to your tables. Okay, KD equals 8. G PVIF. KD equals 8. 0.315. 1000 into 0. KD equals 8 for 15 years. 0.315. Yes, You got it? Yes, sir. Okay. 0.315. ठीक? अब यहाँ पर आ जाए 100 into. So let's go to PVIFA. FEIFA in PVIFA. Okay. 8%. 8% and 15. 8.56. 8.560. G. Give me the figure. 856 plus 315. 1171. 1000. 171. 1171. यानी अभी भी थोड़ा सा कम है. 7 करना पड़ेगा. थोड़ा सा इसको और कम करना. 7. Let's find it out for 7. Equals 100 into 7%. 9.108. 9.108 plus 1000 into 9.108 PVIF. Go to PVIF. Okay, 7% and 15. 0.362. Okay, so that means 362 plus 910.8. G. 1272.8. 1000. 272.8. 272.8. So this is what we can do at the most. सबसे ज़्यादा हम ये कर सकते हैं. अब मुझे क्या हुआ? मुझे दो चीजें बच गई. It must be somewhere between 8 and 7. Why? Because the value is between 8 और 7 की जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इसके दरमियान लाई कर रही है. 1250 इसके दरमियान लाई कर रही है. इसका मतलब जो मेरा KD है जो मुझे चाहिए वो भी इसके दरमियान कहीं पर है. ठीक है? इसके दरमियान कहीं पर है. अब इसके दरमियान किधर है? This is what I need to find out, and for that I use something which is called as. कभी इस्तेमाल किया है इस तरीके को? इसको क्या बोलते हैं? कभी देखा है इसको क्या कहते हैं? Interpolation. Never heard of it? Interpolation कभी नाम नहीं सुना? Okay, so this is called as interpolation. ठीक है? Interpolation है. हम interpolate करते हैं कि इसके दरमियान कहाँ पर लाई करें. अब हमारे पास दो values हैं. दो values वो दो values ये. ठीक है? मेरे पास दो values कौन सी है? 7% and 8%. And I know my KD is somewhere in between here. Yes, sir. ठीक? My KD is somewhere in between. Okay? 7% which is 0.07. जब 7% मैं करता हूँ, so what is the present value? 1272.8. Yeah. And when I do it with 8% KD, what do I get? 1171. सही है? ये हो गया? अच्छा. अब क्या करना है? अब find out करना है the difference between 250.
ठीक है, यहाँ पे आपको केडी पता नहीं है और यहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए 1250, but I do not know the key. Okay, so I find out the difference between these and this one. ठीक है जी, इसका ये डिफरेंस कितना है? 22.8 सर 22.8 यस सर और इसका डिफरेंस 1%. इसका 1%. केडी क्या है? Do you know that? नहीं. So do you know the difference? नहीं. Do not know. You don't know it, ना? ठीक है? Okay, आगे चलें. फिर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस. 101.8 ठीक है? इसका और इसका डिफरेंस सिंपल 1%, which is 0.01. सही है? इन दोनों का डिफरेंस 101.8 101.8. 1001 ठीक? क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है? This divide by this divide by this. ठीक है, याद रखें. This divide by this. ये जो डिफरेंस निकालेंगे, this divide by this is equal to this divide by this. ठीक है? 22.8 divided by 101.8. Can I solve for x now? Can I solve for x? So therefore x equals, ठीक है, sorry, x equals 22.8 divided by 101.8 0.2239 multiply by 1%. 2.23 2.239. 2.239 यस सर ये आपने कैसे मल्टीप्लाई किया था 1% से? यस सर आपने 1% को 1 लिया या 0.01 लिया? 0.001 नहीं 0.01 0.01 लिया. यस सर गलत है सर नहीं सर तुम्हारा सही है करें कैलकुलेट चेक करें. सर अगर हम सिर्फ 1% के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 0.0239 आता है तो ये सही, लेकिन इसने zeros है. यस सर ठीक है. So what is the figure? 0.2239 0.0239. ये आप सही है? डबल जीरो सर डबल Double जीरो zero. पॉइंट डबल डिवाइड जीरो डबल है जीरो सर. पॉइंट डिवाइड डबल जीरो 0.00 अब 10% होगा ना 1 divided by 100 ठीक है. 10% is 0.1. 1 divided by 100 will be 0.0. यस सर बस सिंपल. ओके, ये यार यस सर यस सर ये यार ओके. अच्छा, काम ये आ गया. ये अगर इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में चेंज करूं, if I convert it into percentage form, what would it be equal to? 0.22 Okay, multiply by 100 करूंगा, ये दो चले जाएंगे. 0.2239. Now this is x over here. ये था, which means the difference between 7 and x. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस था. तो इसका मतलब ये है कि अगर 7 के साथ इस x को ऐड कर दूं, I will get KD. So 7% plus 12239. So 7 plus 0.2239 will give me 7.2239%. In other words, 7.22%. ठीक है? So that's how we interpolate and we find out the value. 7.2 अब याद रखें, जितना आप नजदीक होंगे, अब एक और बात करते हैं, जितना आप नजदीक होंगे इस फिगर 1250 से, उतना ये फिगर ज्यादा एक्यूरेट होगा. नहीं तो अदरवाइज अगर मैं देखूं and instead of 7 or 8 I take 5 over here and I take 10 over here, would that still be between these two figures? फिर भी 1250 और ये KD इसके दरमियान ही रहेगा. But then the answer would not be that accurate. So this is the most accurate one which I can do in this situation. ठीक है? लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा ताकि आप इसके नजदीक पहुंच सकें. ठीक? हमने एक बार किया बस, और दूसरी बार हम पहुंचे. ठीक है? सो एग्जाम में आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या मॉडल लेते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है
अंदाजे के मुताबिक हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इट्स समवेयर अराउंड 8 9 10 इस तरह होता है, ठीक है। तो आप इसके आसपास फिगर्स देंगे तो चांसेस आर यू वुड हिट दी राइट वन सून। सर अगर 3-4 करें 3-4% ले यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 तो तो फिर सर 10 9 7 8 इस तरह करें। तो फिर एक एक करके 10 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 7 लेंगे। जब आप 7 पे 10 9 8 पे आ जाएंगे तो ये फिगर आ जाएगी, 7 पे आएंगे ये फिगर आ जाएगी, बस इसके बाद इसको लेके नहीं करते। हमने भी इस तरह किया ना, वी स्टार्टेड विद 10 और 9 को उसने कहा छोड़ के डायरेक्ट 8। मैंने तो कहा कि नहीं पहले 9 करता हूं, ठीक है, लेकिन उसने कहा नहीं 8, तो बस मतलब जिनको के नजदीक होगा उनका नियरेस्ट उसका नियरेस्ट जाकर जो उससे ऊपर, एक उससे ज्यादा हो, एक उससे कम है, और फिर उसको इस तरह लिखें, स्मॉलेस्ट देन योर फिगर देन द लार्जेस्ट, ठीक है। आपकी फिगर इन बिटवीन है ना, तो स्मॉलर फिगर फर्स्ट देन योर फिगर जो कि यू नीड टू फाइंड आउट देन द लार्जर फिगर। फिर क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। फिर क्या करना है, डिवाइड दिस बाय दिस एंड डिवाइड दिस बाय दिस, इक्वेट कर दें इसको और फिर उसके बाद सही है, तरीका याद रखा एग्जाम में। दिस इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन, सो यू नीड टू इंटरपोलेट फॉर YTM। क्लियर है क्लास? ओके, आगे चलते हैं। अब ये तो था एक आम बॉन्ड के लिए ना, सही। अब अगर YTM is not given for any other bond, let's say zero coupon bond या perpetual bond, तो वो ज्यादा आसान है मुश्किल है? किस तरह आसान है? उसका फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है उसका? KD डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इक्वल्स I over KD। वो तो बहुत सिंपल हो गया ना फिर, ठीक है। I की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की? 100 KD is not given and वैल्यू को मार्केट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, मार्केट वैल्यू इज 1250, बस सिंपल फाइंड आउट। उन वैल्यूज में आसान है जहां पे फॉर्मूला आसान है, इस तरह की वैल्यूज में डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेमी एनुअल बॉन्ड। Determine the yield to maturity for the semi-annual coupon paying bond with the finite। अब semi-annual को देखते हैं। semi-annual क्या आता है? semi-annual के फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में क्या फर्क है? KD divided by 2 and divide by 2 and multiply by 2 I divide by 2। maturity value same, सही है? Okay, so this is the formula, this is what they have done with the formula। ये formula है, you do not know YTM को अपने फाइंड आउट करना है, YTM को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। इसको हटा दो यहां से, नहीं नीचे नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है, ओके। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट YTM। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट YTM। YTM would be equal to 1 प्लस, सबसे अच्छा इस तरह आपको करके बताता हूं जिससे आपको आसान है। फर्स्ट फाइंड आउट KD डिवाइड बाय 2, ठीक, then plus 1, then raised to power of 2, then minus 1। this is your YTM, ठीक है। this is what it looks like, this is what it looks like। okay, let's do it। ये जूनियर बॉन्ड जी, ये कौन सी बात है? ये सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड। okay, Julie Miller wants to determine the YTM for another issue of outstanding bonds. The firm has an issue of 8% semi-annual coupon bonds. जहाँ पर आपके पास semi-annual लिखा हुआ आ जाए, so keep in mind this is where you need to divide and multiply by 2. Okay. Semi-annual coupon bonds with 20 years left to maturity. 20 years left to maturity would be your N. Okay. The bonds have a current market value of 950. 950 will be your intrinsic value. Okay. So now what is YTM? G. YTM इसमें क्या होगा? उस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे ठीक, फिर KD इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर KD को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। जब इस फॉर्मूले से आप लोग KD फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा? 8% सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड क्या आएगा?
Come on, start. Correct. Start. 8% semi-annual coupon bond कितना होगा? 80. So 80 multiply with PVI. multiply by PVIF. Multiply by divided by जी. Come on class, KD आपके पास क्या आएगा? KD sir 8%. 8%. Yes sir. 8% KD आपने कहाँ से निकाला? उस फॉर्मूले से किस फॉर्मूले से? V is equal to I divided by KD. V equals I divided by I divided by KD. I is already given 8% and V is also given 950. डायरेक्ट कि आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया और किधर इस्तेमाल किया? और ये कौन सा बॉन्ड है? ठीक है? This is not a perpetual bond. This is a zero coupon paying bond. So it's a zero coupon paying bond. That means you cannot use that formula. Okay, G class. Zero coupon sir. The coupon is 8%. वो perpetual bond था ना? वो perpetual bond था या zero coupon था? वो perpetual था. तो ये perpetual है? नहीं तो फिर how can you use that formula? It's longer. 140. ठीक है? Okay. जी. Start करें? Yes. Okay. Let's start. Let's start okay. Okay. क्या लिखें? बताएं. 76 multiplied by 76 multiply by present value when you can transfer. figures याद है सबको? ये figures लिख लें. Let's try the figures first. 950 Yes sir. and 8% and 20 years. N equals 20, I equals 8%, B equals 9. So let's find out. Okay, so now I would be 80. I would be 80. Yes sir. अच्छा आगे PVIFA Yes sir. KD not known Yes. 20. 20. Okay, plus 1000 PVIF KD not known 20. and 20. Okay, and all this should be equal to 950. Okay, let's make a guess first. हाँ सिर्फ डिवाइड बाय 2 आप नहीं फिर उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे. ओके जी क्लास टेबल where do you want to start from? Start from 10%. No sir. 10%. 9%. चलो दोबारा 10 से स्टार्ट करते हैं. Okay, let's start with 10 in which this is PVI. So 10% and n equals 0.149. 1149. So 1000 into 0.149. ये हो गया plus 80 into PVIFA 80. So PVIFA move to PVIFA with 20 PVIFA. Okay. So 10% for 20 years. 8.1. 10% for 20 years. 8.514. 5.1. Okay. 8.514. G. 1,000.4. So this would. अच्छा आप मुझे full figure बताएं. 1000.4. 0.4. 1000.4. So 1000.4. So what do you need to do? How would you adjust the KD now? KD को increase करूँगा तो ये figure कम हो जाएगा. valuation नीचे आएगा तो 950 के आसपास होगा. Increase करके 11 कर दूँ. So let's do it for 11. Okay. 80 into 11%. 11% for 20 years. 7.963. Okay. 7.963. Now for 1000, it would be 1000 into 7.963. Okay. 11% for 20 years. 0.124. ठीक है? 0.124 would be equal to 124. So 124 plus this figure. जी 124 plus this figure.
Come on class. ये 124 है, ये फिगर बताइए क्या है? 80 into 7.960. 761.04 plus 124. सर सर वो पिछले वाले में आंसर 830.12 आता है सर. I am calculating this. 830.12. 830.12. Come Now what do you see? Twelve के लिए तो नहीं, अभी इसको ज्यादा करना है ना, इसको ज्यादा करना है, केडी को कम करेंगे. नहीं और सर सर अभी कम करेंगे तो फिर तो ये गलत होगा. केडी को कम करना है, यानी 10 से कम करना है इंक्रीज है हाँ कम है. कितना कम करें? 2 8 9. Okay, so 9 and this is PVIF. 9 for 20 0.178. So this will be 178. Yes, sir. Okay. Now move on to PVIFA. PVIFA. 9% for 20 years. So 9% for 20 years is 9.129. Okay, ji. Give me the values. 178 को ऐड करना है. 908 for 3 days. 90 ओ तो एक और भी करना पड़ेगा. 908.32 फिर एक और करना. 7 तक आ जाएंगे. ठीक है. हाँ बस अब बिल्कुल 1%. सो हम लोगों ने अभी क्या किया था? 9 किया. अभी हम लोगों ने 9 किया था. सर 7 कर दिया. हमने 9.129 पे किया था ना. Yes, तो sir. 8 पे आए तो मेरे ख्याल में शायद क्लोज हो जाएगा बहुत. सो लेट्स डू इट फॉर 8%. यार यहाँ परसेंटेज को लिखना ताकि याद रहे. 11 and this one is 9. नो सर 9% is ये ऊपर वाला 9% ऊपर वाला 9. 10 9 ये 10 था, यस सर ये 9. ये 9 था, 8. and now we are doing for 8. So let's do it for 8 now. Okay, so for 8, this 80 into 8%, 20 years, 9.818. 9.818. Okay, and now let's move to PVIF for 8%. PVIF for 8% for 20 years. 0.215. 0.215. 215 will be equal to 250. 1000.44. सही है? Yes, sir. 9 and 8. Yes, sir. These are the values. Yes, sir. Say, okay. So let's write it over here. So now, starting for smallest, 8, then KD, then 9. When it is 8%, the value is 1000. 0.44. Many 1000.44. For KD, the value is 950. 950. And for 9%, the value is 908.32. Okay? First, you need to find out the difference between this and this. 1%. So this is X. This one would be 50.44. 50.44. Now the difference between this, which is 1%, and the difference between this, 92.12. Okay? So now, X divided by 1% equals 50.44 divided by 92.12. G. So, X would be equal to what? 0.5. 5475. 0.5475. Multiply by 1%. ठीक? Multiply by 1%. 0.05 0.005 1% के साथ Yes, sir. multiply 0. करेंगे. अच्छा अभी आपने 1% मल्टीप्लाई नहीं किया? नहीं अभी करेंगे. 0.005 मैं तो X की वैल्यू आपसे बता रहा हूँ. 0.005. 0.005475. 0.5475. Yes, sir. ओके? और इसको क्या करेंगे? 100.
8 के साथ ऐड करना होगा, Yes, sir. ठीक, ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे so it would be 0.5475, 0.5475 आएगा ना Yes, sir. Yes. परसेंट, so plus 8 equals 8.5475%, ठीक, 8.5475%. So now it is 8.5475%. Now put it. Okay, so 8.5475%. Now this is the formula. Okay, 8.5475%. 8.5475% divided by 2. पहले ये करना, 4.27375. फिर प्लस 1 whole square. 1 कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. 1.0427. ओके, हटाना नहीं है, कैलकुलेटर से फिगर नहीं हटानी, रेज टू पावर ऑफ 2 और स्क्वायर, अब स्क्वायर कर 1.087. माइनस 1, 0.087. ओके, 0.0873 which is equal to 8.7. क्लियर, क्लियर, प्रैक्टिस भी आपकी हो गई, 2 बार आपने कर लिया, ठीक है, एक चीज आपने 2 बार भी कर ली, ये भी कर लिया, YTM के क्वेश्चंस भी है बुक में, वो जो हम लोग उस वक्त देख रहे थे, आपने कहा सर yield to maturity how to find out, so this is how you find out yield to maturity, ठीक, so now you are in a position to complete chapter number 4 I guess. सर इसमें जो कूपन दिया हुआ है 80 इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना, जो कूपन दिया है, अच्छा दोबारा देख लेते हैं, कूपन दिया है उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना, किधर, ये ऊपर ये 10% 9% 10% जो हम फाइंड करते नहीं उसमें तो हमने फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं की, इट्स एग्जैक्टली द सेम एज इट वाज फॉर एनुअल, it was for annual, हाँ, जो भी हो, daily compounding, continuous compounding, you will not change this formula, you will do it like this, but then when you need to convert it to semi-annual, you will do it like this, 2.8,000. ठीक है, सर ये जो असाइनमेंट एस्टिमेट सबमिट करा है सर चैप्टर 4 की डेट तो इसको पॉज करते हैं, डेट तो गुजर गई है सर किसकी डेट, चैप्टर 4 असाइनमेंट तो चैप्टर 4 असाइनमेंट तो आपने की